गिम्बल होता तो सही होता यार। हम थोड़ा सा खाना भी पैक करवा के लाए हैं, बहुत भूख लग रही है। वाह, और अब हम यहाँ करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। अभी हम ओम बीच पर ही हैं। इस बीच का नाम ओम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओम शेप में ये बीच है। उसके बगल में एक कैफ़े है, नमस्ते कैफ़े। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर, बियर वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पर। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। और अभी हम उस साइड जाएंगे, पहाड़ के साइड। इस साइड का तो हमने कवर कर लिया है, पहाड़ के उस साइड जाएंगे तो देखते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा ही होगा। क्योंकि ये ओम शेप में है तो आगे का दिख नहीं रहा है कि आगे मतलब कैसा क्या होगा। इसके बाद हम याना केव्स जाएंगे, जो कि यहाँ से ओम बीच से 52 किलोमीटर होगा, तो जाने में 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। और तो आप इंजॉय कर सकते हो। आप नहीं कर रही एंजॉय? मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, पर मुझे पीछे इतने पसंद नहीं है। मुझे हिल स्टेशन जाना पसंद है, मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती आना पड़ता है। ये सब काट देगा अपन। नहीं काट देगा। और ये जूस कैसा है? और मैंने ये ऑर्डर किया है लाइम मिंट थोड़ा अच्छा है, नॉट बैड। ये सुबह जाते हैं और इस टाइम तक ये मछली पकड़ के ले आते हैं। हम देख सकते हो कितनी सारी मछली है। इस टाइम मछली निकाल रहे हैं यहाँ से। कितने निकाल रहे हैं? Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for myself? हमने ओम बीच कवर कर लिया है। अब याना केव की ओर निकल रहे हैं हम। करीब 1 घंटा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए। लेट्स गो। After 2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change.
Hey guys, if you liked the video, please hit the like button and do consider subscribing to our channel Lazy Gozo. Your likes and subscribe keeps us motivated. Thanks for watching. And it was somewhere then I started to feel